Good morning, all. Today, our topic of discussion is quadrilaterals. What is a quadrilateral? Quadrilateral is a polygon with four sides. That means a figure which has four sides that can be named as quadrilateral. Now, today I'm going to tell you, depending on the characteristics of the sides of a quadrilateral, quadrilaterals may be put under different categories, right? So first of all, we'll discuss about trapezium. This figure, this is called trapezium. As it has four sides, so it is a quadrilateral. Now here AB is parallel to CD. In quadrilateral ABCD, AB is parallel to CD, and in quadrilateral PQRS, PQ is parallel to SR. So here in the quadrilateral, a pair of, एक पेयर opposite sides का parallel होता है, so it is called a trapezium. Now next is parallelogram. If in a quadrilateral both the pairs of opposite sides are parallel and equal, then it is a parallelogram. That means opposite sides are equal and parallel. And opposite angles of parallelogram, opposite angles, they are also equal. Okay. AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Again, AB is equals to DC and AD is equals to BC. That means opposite sides are equal and parallel. Angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D. That means opposite angles of parallelograms are also equal and diagonals bisect at O here, and here the bisecting diagonals AO is equals to OC and BO is equals to OD. Okay, so here ABCD is a parallelogram, and parallelogram can be written as like this: parallelogram. Next is rectangle. This is a rectangle. Okay, in the rectangle opposite sides are equal and parallel. Okay, in rectangle opposite sides AD is equals to BC and AB is equals to DC. Parallel also, AB is parallel to DC, AD is parallel to BC, and here all the four angles are of 90 degree and diagonals bisect each other, and AC is equals to BD. The diagonals of rectangle are also equal. AC is equals to BD, and all the four angles are of 90 degree. Now come to rhombus. Rhombus is a kind of parallelogram with all the four sides equal, and here AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Any opposite sides are parallel. AB in rhombus, all the four sides are equal. So AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. And opposite angles are also equal. Angle A is equal to angle C, angle B is equals to angle D. And here the diagonal bisect each other at 90 at right angle. Diagonal bisect each other at 90 degree. So angle AOD, angle DOC, angle AOB and angle BOC all are equal and equals to 90 degree. Now this is a square. In square all sides are
equal, and here all the four angles of square are also 90 degree, and here also diagonal bisect each other at 90. Okay, angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D, again 90, and AB is equals to BC is equals to CD is equals to D. All sides are equal, and AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. So ABCD is a square, and a rhombus with all the four angles right is called a square. Here again, as the diagonals are bisecting at 90 degrees, so angle AOB, angle BOC, angle COD and angle DOA all are equal, that is of 90 degree. And diagonals AC is equals to BD. Okay. Now let's start exercise 5.7. True or false? Each angle of a rectangle is a right angle. Yes, it is true. All the four angles of right angle are right, 90 degree. The opposite sides of a rectangle are equal in length. True. The diagonals of a square are perpendicular to one another. It is also true. All the two diagonals bisect each other at 90 degree. D. All the sides of a rhombus are of equal length. True. सारी की सारी साइड rhombus की equal हैं. All the sides of a parallelogram are of equal length. सारी की सारी sides parallelogram की equal हैं. No, it is false. Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. So this is false. Opposite sides of a trapezium are parallel. False. A pair of opposite sides in trapezium are parallel. एक पैर पैरेलल है और दूसरा नॉन पैरेलल है, तो दिस इज फॉल्स. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल. स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल. स्क्वायर के केस में भी 90 डिग्री होते हैं सभी एंगल्स, रेक्टेंगल के केस में भी होते हैं. स्क्वायर के केस में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड रेक्टेंगल के केस में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो स्क्वायर के केस में भी हो सकता है. सो दैट इज़ वाई स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल. अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं? आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को याद करना पड़ेगा. इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. इन द सेम वे in rectangle opposite sides are equal and parallel, so rectangle can be thought of as a special parallelogram. Square can be thought of as a special rhombus. स्क्वायर को आप स्पेशल rhombus क्यों कह सकते हैं? अब rhombus की प्रॉपर्टीज़ क्या? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर की भी सेम है, और डायगनल्स परपेंडिकुलरली कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर में भी वैसा ही होता है. सो बिकॉज इट्स फोर साइड्स आर इक्वल and diagonals are perpendicular. Diagonals perpendicular होते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. So square can be thought of as a special rhombus. Squares, rectangles, parallelograms are all quadrilaterals. क्यों है quadrilaterals? Because all of them have four sides. Square is also a parallelogram. Why? Square को parallelogram क्यों कहते हैं? Because its opposite sides are equal and पैरेलल. क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम की, और स्क्वायर की भी ऐसा ही होता है. सो दैट इज़ वाई स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. क्वेश्चन नंबर 3. अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? अब रेगुलर कब बोलते हैं किसी भी फिगर को? हम तब बोलते हैं जब उसकी सारी साइड्स बराबर हों एंड ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर. अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, चौथा भी 90. सो ऐसा कोई फिगर जो कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, दैट इज अ स्क्वायर. स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.